ऑलराइट, सो आपके पास जो विंडोज़ जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो विंडोज़ पे रन हो रही होती हैं पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है, लॉन्ग रनिंग विंडो सर्विसेज होती हैं, इनको हम डेमन्स भी कहते हैं इन लिनक्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल कैसे हो गई आपके पास डीएनएस, एचटीटीपी, एसएसएच, टाइम सिंक्रोनाइजेशन, आईएएस, इंडेक्सिंग, एंटीवायरस, ये सारी एग्जांपल्स हैं विंडो सर्विसेज की। इसके अलावा भी होती हैं गूगल क्रोम की अपनी सर्विसेज चल रही होती हैं, हर एक प्रोग्राम की अपनी सर्विसेज चल रही होती हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ विंडो सर्विसेज। नाउ स्टार्टिंग ऑप्शंस क्या होते हैं आपके पास कि इट कैन स्टार्ट ऑन स्टार्टअप, इट कैन हैव अ डिले स्टार्ट, ऑटोमेटिक, मैनुअल स्टार्ट, कैन बी स्टार्टेड बाय सम पैरामीटर और इट कैन बी स्टार्टेड बाय अ स्पेसिफिक यूज़र। नाउ हम इन सर्विसेज को देख कहाँ पे सकते हैं, हम CMD पे देख सकते हैं बाय राइटिंग द नेट स्टार्ट कमांड, या फिर हम एक कंप्यूटर मैनेजर पे खोल के देख सकते हैं जहाँ पर हमारे पास आ रहा होता है सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस के अंदर। हम इसको सर्विसेज मैनेजर के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है, by using the command by running a command services.msc and also on the task manager, ठीक है। मेथड्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, मेथड्स आपके पास होते हैं सर्विस स्टेटस, ठीक है। सर्विस स्टेटस बेसिकली ये बताते हैं कि क्या वो एप्लीकेशन जो भी वो सर्विस है, इट हैज़ इट स्टार्टेड, इज़ इट पेंडिंग, इज़ इट ऑन पॉज और इट हैज़ इट स्टॉप्ड। whereas जो उसके मोड्स होते हैं, अगेन इट्स ऑल अबाउट, is it going to um, have a delayed start, is it going to be a manual, automatic, or is it disabled? And the start as or start by basically ये बता रहा है कि क्या लोकल सिस्टम पर स्टार्ट हो रहा है, क्या कोई और लोकल सर्विस उसको स्टार्ट करे या नेटवर्क सर्विस को स्टार्ट कर रही है। सो लोकल सिस्टम, और लोकल सिस्टम जो होता है वो के पास हाईली प्रिविलेज्ड अकाउंट होता है, ठीक है, बिल्ट इन अकाउंट होता है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एक्सटेंसिव मेथड्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं ऑन द लोकल सिस्टम। तो एक्चुअल नेम ऑफ द अकाउंट क्या होता है आपके पास, NT authority backslash and then you're writing forward slash and then you're writing system। whereas जो आपका लोकल सर्विस जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली again it also has some privileges built into the account, लेकिन उसके पास सेम लेवल ऑफ एक्सेस होता है टू द रिसोर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ यूज़र ग्रुप, ठीक है। तो इसी वजह से होता है क्या कि अगर वो एक्सेस करना चाह रहा होता है नेटवर्क लेवल रिसोर्सेज, तो वो ज़्यादातर नल सेशन पे चले जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी क्रेडेंशियल्स। तो जो आपकी बेसिकली वो होता है, इसको जो इसका जो एक्चुअल अकाउंट का नाम होता है वो होता है आपके पास NT authority / local service, and then you have your network service which is basically saying कि इसके बाद जब higher level of access है as compared to the local service, एंड इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि ज़्यादा हायर लेवल ऑफ एक्सेस है टूवर्ड्स द नेटवर्क, टूवर्ड्स द resources and your objects, which basically allows it to also have access towards network level resources by using some credentials of the computer systems account। और इसका जो एक्चुअल नाम होता है वो होता है NT authority / network service। Now service based class होती है, basically it is included in the service process, system dot service process की नेम स्पेस में इंक्लूडेड होता है ये, ठीक है। ये बेसिकली प्रोवाइड कर होता है सारी फंक्शनैलिटीज़ टू दी अदर सर्विसेज, ठीक है, क्लासेस, यानी सारी जो दूसरी सर्विस क्लासेस हैं वो उससे डिराइव होती हैं, और उन सर्विस की क्लासेस के लिए वो मेथड्स प्रोवाइड कर होता है जो आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। सो एन एग्जांपल ऑफ दैट इज़ कि अगर हम एक सर्विस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले सर्विस लिखेंगे पब्लिक एंड देन सर्विस का नाम लिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल सर्विस 1 लिख रहे हैं, and then what you do is you're going to initialize this component, so you write initialize component, and then you're going to define its name, so you can say this dot service name equals to service 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है कैन स्टॉप का,
और आप उसको या तो ट्रू सेट कर सकते हैं या फॉल्स सेट कर सकते हैं। वो बेसिकली ये होता है कि आप इस सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो देयर आर सम सर्विसेज विच यू डोंट वांट टू स्टॉप एवर। सो फॉर एग्जांपल विंडोज़ की अपनी सर्विस चल रही बैकग्राउंड में, यू डोंट वांट टू स्टॉप दैट। बट अगर आपकी खुद की कोई सर्विस है देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्टार्टिंग और स्टॉपिंग दैट। सो ये हो गया। नाउ we're going to look at as to which methods can you overload, right? So ये कौन से overload की बात हो रही है। so हमारे पास methods जो होते हैं वो होता है हमारे पास void start होते हैं, sorry void on start होता है, हमारे पास एक होता है void pause होता है, ठीक है। so start बेसिकली कह रहा है कि जब start हो तो क्या काम करना है। pause बेसिकली ये कह रहा है कि is it on pause? Oh yeah, it's on pause, sorry, on pause, on continue, and then on stop. So on is very important. So on pause basically ये कहता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको रिलीज़ नहीं करो, ठीक है, उनको बस पॉज करके रख दो। और कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि अगर पॉज है तो उसको रिज्यूम कैसे करना है। और स्टॉप का बेसिकली मतलब है कि रिसोर्सेज सारे रिलीज़ कर दो एंड देन यू कैन स्टार्ट इट अगेन इफ़ यू वांट टू। सो हाउ आर वी बेसिकली ओवरलोडिंग देम। सो हम उसको ओवरलोड करते हैं प्रोटेक्टेड ओवरराइड। So override, and we are overriding what? Void on start. And then comes your try, and then तुम्हारा कोड यहाँ पे दार होता है, and then you have your catch, exception E1, and if you want to have some exception what you want to do in that. Similarly this is the same thing. अच्छा void start के लिए it's important to have your string arguments. But for on pause or on stop you don't need to provide this thing. And similarly उनमें भी तुम try और catch कर होते हो। अब उसका जो main method होता है, how are you basically calling this? So you do public static main, so public static main, and in this main you're basically using service based class जहाँ से सारी services basically derive हो रही हैं। So you say service base and then the array, and then you write services to run, and then you do services to run equals to new what? Service base. So new service base, and note that I'm including a curly bracket, not a square bracket, not a circle bracket, it's a curly bracket, and then I write new, and then the service हमने create की थी जो उसकी class थी, so new service 1, and then we are sorry, I don't think so. Do you have a method over here? Yeah, sorry, you have its constructor, and then you're closing it. So this was basically what I've done over here. Service 1 है आपके पास, initialize component किया, this service name किया, आपने इसकी void on start और void on stop को basically override किया हुआ है, and then static void main के अंदर आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, basically service based services dot run कर रहे हैं and all of this stuff. And then lastly what you do is you write service based dot run, and then you are running the service. Now अब इनको हम start कैसे करेंगे, stop कैसे करेंगे? For that सबसे पहले what you need to do is you need to, here we go. So first what you need to do is you need to install the service, and the way you install the service is you write install util and then the service.exe. अगर uninstall करना है so you just do /u service.exe, and if you want to basically run the service or start the service, then you're going to your task manager or your control panel, जो भी हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी यहाँ से हम एक्सेस करके उसको कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ इंस्टॉलिंग अ सर्विस, जो इंस्टॉलेशन हो रही है, इंस्टॉलेशन बेसिकली एक्सटेंड करती है किसको? इट बेसिकली इंस्टेंस अ क्लास विच इज़ बेसिकली कॉल्ड system डॉट configuration डॉट installer डॉट install, ठीक है, इसको बेसिकली एक्सटेंड कर रहा होता है। और सर्विस इंस्टॉलर के अंदर क्या चीज़ होती है? ये चीज़ होती है सर्विस स्टेटस, सर्विस मोड्स एंड स्टार्ट बाय, कि कौन स्टार्ट कर रहा है, उसका मोड क्या होगा, एंड देन क्या वो स्टार्ट हो चुका है नहीं हो चुका, सॉरी स्टार्ट हो चुका है नहीं हो चुका, ये तो हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, बट नेम ऑफ द सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम ये सारी चीज़ें बता देते हैं, और जहाँ पर ये सर्विस एक्सिक्यूट होगी उसी फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर इस इंस्टॉलेशन की भी असेंबली फाइल जाके सेव हो जाती है। And now let's talk about
ये बेसिकली सर्विस एग्जाम्पल कर क्या रहा है? सो बेसिकली ये कर ये रहा है कि इसने एक फ़ाइल क्रिएट की, उसने एक टाइमर सेट किया हुआ है जो बेसिकली जब टाइमर स्टार्ट होगा, जब वॉइड ऑन स्टार्ट होगा तो वो बस उसको स्टार्ट टिक करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पे टाइमर डिफाइन हुआ है। अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्ट, जो अभी फ़िलहाल कोई काम करना नहीं है, और अगर स्टॉप करना है तो अगर राइटर नल नहीं है तो राइटर को क्लोज़ करना है और राइटर को नल कर देना है, एंड देन यू कैन स्टॉप योर सर्विस. So very simple, it's not that complicated. You're basically, what you did is you created a file, जिसको हम राइटर कह रहे हैं, you created a timer, ठीक है, जो बेसिकली टिक कर रहा होगा। यहाँ पे कोई तुमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया होगा, इसकी क्लास डिफाइन की होगी जो बेसिकली वो टाइमर कर रहा होगा, एक्सिक्यूट कर रहा होगा। एंड देन ऑन स्टॉप क्या करना है कि अगर वो नल नहीं है राइटर, बिकॉज राइटर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ तुमने, सो दिस शुड नॉट बी नल, सो you're closing the writer, which is basically a pointer, right? You're closing the file and then you are setting it to null, which basically means that ये वापसी execute now, and then you can add this exception. If anything goes wrong, then you can do that. So एक आपके पास इनबिल्ड एक और स्केड्यूलर आता है जिसका नाम होता है टास्क स्केड्यूलर, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको कुछ फंक्शंस बना के दे रहा होता है। यू कैन से इट्स लाइक वेरी इजी टू यूज़ वाला वर्जन विच दैट एवरीबडी कैन यूज़। उसके लिए प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। मगर उसको अगर हम कंपेयर करें विंडो सर्विसेज के साथ तो वी कैन सी दैट टास्क स्केड्यूलर जो है इट इज़ वर्किंग फॉर योर सिंपल प्रोग्राम और प्रोसेसिंग, एंड योर विंडो सर्विस इज़ वर्किंग फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, complex program and processing. This is only activated on time. This is activated or triggered by some event or some other program. जो आपकी विंडो सर्विसेज हैं, दे आर मोस्टली फॉर परमानेंट या कंटिन्यूस के लिए, प्रोग्राम्स के लिए हो रही होती हैं, ठीक है। टास्क के लिए परफॉर्म हो रही होती हैं, और जो टास्क स्केड्यूलर होती हैं देयर समटाइम्स यू कैन टर्न देम ऑन, समटाइम्स यू कैन, इट्स ऑन यू। ये जो टास्क स्केड्यूलर की अपनी जो होती हैं सर्विसेज, दे रनिंग ऑन देयर ओन पेस, और उनकी जो जनरेट हो रहा होता है आउटपुट, इट्स नॉट नेसेसरली डिपेंडेंट ऑन अदर सर्विसेज। Whereas your Windows services on the other hand, ये services बस data provide कर रही होती हैं whenever it's needed, or it's actually performing some operations when it's triggered. Okay, so that was all related to Windows services.